Vietnam is a paradise for coffee lovers. After all, it's the second largest exporter of coffee in the world. Did you know there's no legal drinking age in Vietnam? यहाँ का खाना इतना फेमस है that pho and banh mi, यहाँ की दो dishes का जिक्र ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी मिलता है. And it's the fifth most happiest nation in the entire world and has no lack of smiles. If that doesn't convince you to visit Vietnam, let me tell you 5 more reasons to visit this beautiful country in 2022. तो सबसे पहला रीज़न है यहाँ की डाइवर्स हिस्ट्री और कल्चर. हम सबको ही पता है कि वियतनाम हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री, वियतनाम वॉर एंड वॉट नॉट, एंड यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स का इन्फ्लुएंस है, फिर चाहे वो इंडियंस हो, चाइनीज़ हो, फ्रेंच हो. एंड ये इन्फ्लुएंस आपको एक्चुअली यहाँ के डिशेज़ में देखने को भी मिलता है. जैसे कि बान मी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो बगेट है, जो सैंडविच है, दैट्स सो फ्रेंच एंड वॉट गोज इनसाइड इट इज़ सो चाइनीज़. सो वो फ्यूजन आपको डिफरेंट डिशेज़ में यहाँ मिलेगा. And that fusion you can actually see in the places, in the food, in the religious places, in the way people live their life. And ये एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा just to witness that. फिर चाहे वो मेकोंग डेल्टा की रिवर लाइफ हो, सैंड ड्यून्स हो, हनोई में सिटी लाइफ हो, हो ची मिन सिटी, like there are so many places, and as you move from one place to another you see a different culture. Central Vietnam से North Vietnam ही different हो जाता है, which is very very unique to see. सेकेंड रीज़न इज़ द अफोर्डेबिलिटी फैक्टर. तो मैंने एक फ़्लाइट ली थी दिल्ली से हो ची मिन सिटी, डायरेक्ट फ्लाइट वियतजेट की, एंड इट टुक मी लेस दैन 5 hours टू रीच वियतनाम. दैट्स हाउ कन्वीनियंट इट हैज़ बिकम टू रीच वियतनाम. एंड नॉट जस्ट दिल्ली, मुंबई से बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद में या तो आने वाली है या फिर जब तक वीडियो आता है प्रॉब्ली आ गई होगी डायरेक्ट फ्लाइट. So yes, you can take direct flights from India to Vietnam, and that just makes the journey so much smooth. Not just that, I was in the SkyBoss category, and that gave us access to the premium lounge. The food there was delicious, and flight pe bhi I had the company of my best friend. We had hot meals, we had and also vegetarian options, thankfully. We had drinks and we had great conversations, and it was overall a very very comfortable journey. तो and the flight rates are really really affordable. तो अगर आप एडवांस में बुक करते हो तो काफ़ी अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं. इनफैक्ट वियतजेट के ऑफर्स बहुत फ्रीक्वेंटली चलते रहते हैं, जिसमें यू कैन गेट रिटर्न टिकट्स फॉर एज लो एज लाइक below 20,000. So go for it. And ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फूड की अगर हम बात करें तो जैसे स्ट्रीट फूड मिलता है बान मी, विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस डिश हियर. हमने बहुत बार बस 20,000 डोंग की भी खाई है, विच इज़ वॉट लाइक 60-70 रुपीज़ इंडियन रुपीज़. सो स्ट्रीट फूड बहुत चीप है. इवन रेस्टोरेंट्स में आपका एवरेज 200, 300, 400 मैक्सिमम में हो जाएगा काम आराम से. सो फूड अगेन इज़ ग्रेट. एंड इवन ट्रांसपोर्ट आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हो 400 रुपीज़ पर डे पे. और विद इन वियतनाम ट्रैवल करने के लिए आप इंटरनल फ्लाइट्स भी ले सकते हो, जो अगेन इफ़ यू बुक इन एडवांस इट विल बी वेरी चीप. एंड इफ़ नॉट दैट यू कैन टेक ट्रेन्स ऑल्सो, ओवरनाइट ट्रेन्स. एंड या साथ साथ में इवन होटल्स जो हमारे ट्रिप पे एवरेज कॉस्ट आ रहा है पर नाइट, इट्स लाइक 600 to 700 पर नाइट पर पर्सन, विच इज़ अमेजिंग. एंड हम अच्छे अच्छे होटल्स, हॉस्टल्स हर जगह रुक रहे हैं. So I feel like Vietnam is one country in Southeast Asia which can be really really affordable, at the same time gives you so much diversity. The third reason to visit Vietnam is the unique food that you will find here. चाहे आप वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, वियतनाम हैज़ समथिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोकल्स भी वेजिटेरियन हैं. तो आपको वियतनामीज डिशेस भी वेजिटेरियन मिल जाएंगी. एंड टू प्रूव दैट आई एम एक्चुअली राइट नाउ एट अ वीगन बुफे इन हनोई, एंड यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस है बहुत सारे. सो वी आर गोइंग टू ट्राई इट एंड टेल यू हाउ दैट गोज. बट ओवरऑल अभी तक जितना मैंने विजिट किया है साउथ से नॉर्थ, हनोई इज़ माई लास्ट डेस्टिनेशन, एंड दिस इज़ व्हेन आई एम टेलिंग यू दैट वियतनाम इज़ अ पैराडाइज फॉर फूडीज़. यहाँ की जो नेशनल डिश है, लाइक आई सेड, फो एंड इवन बान मी जो सैंडविच डिश है यहाँ की, वो दोनों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी है. दैट्स हाउ फेमस दीज डिशेज आर. एंड नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में फो की जो प्रेपरेशन है वो भी चेंज हो जाती है. And people here can actually argue about it. That's how passionate they are about food. And Vietnamese war के चलते बहुत से creative ideas उन्होंने निकाले थे of substitute. जैसे कॉफ़ी के लिए वो egg यूज़ करते थे, and उससे ही आई egg coffee. ऐसे ही बहुत सी unique चीज़ें पीने के लिए, खाने के लिए आपको वियतनाम में मिलेंगी. And honestly, if you have come to Vietnam, you're just gonna love it if you're a foodie. Okay, so the fourth reason to visit Vietnam is the diversity that you see here.
मैं साउथ से नॉर्थ ट्रैवल कर रही हूँ और अभी तक मैं सेंट्रल वियतनाम में हूँ और इतने में ही मैंने इतनी डाइवर्सिटी देख ली है लैंडस्केप में, फ्रॉम ओशंस, माउंटेन रेंजेस एंड व्हाट नॉट। इनफैक्ट मैं आज एक पूरे दिन का मोटर बाइक टूर कर रही हूँ टू होयवान पास, लैंको बीच, एंड इस एक दिन के ही टूर में आई हैव सीन ब्यूटीफुल बीचेस, ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस, स्प्रिंग्स, ऑयस्टर फार्म्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली वियतनाम फॉर मी। एंड इट्स one of the very few countries where you see that change in the landscape in a very short span of time। आप बहुत थोड़ी सी देर ट्रैवल करते हो और लैंडस्केप बदल जाता है, फिर चाहे वो मेकोंग डेल्टा की रिवर लाइफ हो, मुइने के सैंड ड्यून्स हो, अप अबव हनोई में हेलोंग बे हो, सेंट्रल वियतनाम में माउंटेन रेंजेस हो, टॉप पे राइस फील्ड्स भी हैं, एंड ऑफ कोर्स द बीचेस दैट यू सी, इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल एंड आई फील लाइक देयर इज समथिंग टू डू फॉर एवरीवन हियर। And finally come to Vietnam to meet the lovely people and see their beautiful hospitality। Day 1 से ही हम नोटिस करते आए हैं, चाहे वो होटल का स्टाफ हो, टूर गाइड्स हो, रैंडमली एयरपोर्ट पे कोई मिल गया हो who made sure that we reach safely in Hoi An in our hostel। होयान में हमारी हॉस्टल की कोऑर्डिनेटर हो, she arranged tours for us for free and she made sure that we are not overcharged for anything। She gave us recommendations just like we were family for her, and honestly यही feeling आई है यहाँ पे। After all we all are humans, we thrive on feeling connected with other people, and अगर किसी जगह पे लोग अच्छे मिल जाएं, स्माइलिंग लोग मिल जाएं, हेल्पफुल लोग मिल जाएं, तो मुझे लगता है वेकेशन बन जाती है। तो चाहे आप सोलो आ रहे हो, ग्रुप में आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, you are not going to face any issues with the people here। At least we did not face any issues and we were very very happy, even though language barrier था थोड़ा सा, but Google Translate को यूज़ करके आप आराम से बात कर सकते हो, and people here talk through smiles honestly। So yes, I think that is like, I've spoken about it in the ending, but that's like the number one point that should motivate you to visit Vietnam, because you're going to just feel so loved here। And finally some bonus reasons, like I said, it's the coffee paradise, it's the 5th happiest nation in the world, and also इसकी लोकेशन, वियतनाम की लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया में इतनी अच्छी है कि आप और कंट्रीज साथ में प्लान कर सकते हो, जैसे कंबोडिया, लिटरली एक ओवरनाइट जर्नी में यू कैन रीच कंबोडिया, डिफरेंट कंट्री, लाओस, इंडोनेशिया फ्लाई कर सकते हो आप यहाँ से। सो अगर आप वियतनाम प्लान कर रहे हो तो यू कैन प्लान सो मेनी अदर प्लेसेज विद इट, एंड आई होप दैट दिस वीडियो कन्विंस्ड यू, मोटिवेटेड you, or at least made you consider Vietnam as your next travel destination in Southeast Asia। And if you feel that it was informative, please make sure you give it a like, subscribe to my channel, let me know in the comments if you have any other questions about Vietnam, क्योंकि अभी मैं वियतनाम में ही हूँ और वियतनाम में होते ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। It's just 2 more days left and I am not sure, I don't know how I'm gonna say goodbye to Vietnam। It was that good, and that's it from my side। I will see you from the next video in Vietnam। Bye। Why Vietnam is so beautiful and so diverse? So guys, if you have time to your vacation, you should to come to Vietnam, because in our country you can see we have an ocean, we have a lagoon, we have spring, we have a mountain. So that is the most beautiful country in my life। Wow। I can live here for all of my life as well, so I don't need to like move to another country। Why should people visit Vietnam? You want to say like why Vietnam is beautiful? Sure, because our country is, I tell you, I don't know how to description, but it's very very nice country, very safe, and also we are very friendly, welcome for all the people on the world। Yeah। And you know how to say, price a little bit cheap। Yeah। That's it। That's it। Thank you so much। Thank you।